अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय के शऊर। अभी हम लोग चलते हैं हमारी स्टडीज़ की तरफ। ठीक है, हमने ये BIF101 इंट्रोडक्शन टू बायोइंफॉर्मेटिक्स के 19 लेसन्स कर लिए हैं। इसके 33 लेसन हमने कंप्लीट करने हैं इस वीक के। ठीक है, तो चलते हैं फिर कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसका 19 जो लेसन है वो जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स है। ये हमने अभी तक नहीं किया, ये इनकम्प्लीट है। इसका क्विज ले लेते हैं। स्टार्ट क्विज। In genetics, genetic terminologies, dash is a heritable feature, skin color, height, or etc. Character, variety, breed, trait. ठीक है, सेव कर देंगे। ये तो ये कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो रीटेक कर लेते हैं। One characteristic suppressed by other characteristic is called recessive। और ये हो गया ठीक। इसको कर लेंगे क्रॉस। आगे चल लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। So now we talk about the main subject which we are seeking in this course, that is the genome informatics. But first we know that genome sequencing is there, so that provides us the sequences of the whole genomes of the organisms. So then the a major application in bioinformatics is to find analyze those full genomes and to find those genes which are predicted to have some particular functions. Let's see what genomics is. So NHGRI defines genomics as the study of all of a person's genes, the genome, including interactions of these genes with one another and with the person's environment. So it's the study of genes and their interaction with the environment. So genome informatics then can be defined as the field in which computational and statistical techniques are applied to derive biological information from those genome sequences. Losifo defines genome informatics as it includes methods to analyze DNA sequence information and to predict the protein sequences and structures from it. So when we do genome sequence analysis, after we have those genome sequences, what we gonna do with that is we can do the discovery and utilization of the sequence polymorphism. So different sequences, they vary from one another, so we can identify those polymorphisms, and we can help identify different traits of those organisms by using those polymorphisms. It gives us an opportunity to explore genetic variability between and within the organisms. In genome analysis, we perform these tasks mainly. We do sequencing at first, then we do assembly. Since the sequencing is done in a way in which the whole genome is broken down into the short fragments, and once those fragments are sequenced, we need to put them together. So that step is called as assembly. Once we assemble that genome, we try to find out the regions in which we have large number of repeats, because assemblies they mess up where we have those repeats, so we need to find those regions. So it's an important task to go and look into those assemblies while keeping in mind those regions in which we have those repeats. So we will go over repeats in a section down below. After we have assembled a finished genome, now we can go for prediction of the genes. So we can find the genes by using different patterns or features of those genes. We can also look into the ESTs and cDNAs, the parts from where the genes are expressed, and then they are then transcribed into messenger RNA. So those regions we can find them. So if we want to find them within the DNA, obviously they are then reverse transcribed into cDNA, and then we can look into where those cDNAs are present in the gene. So that will give us the idea
the gene expression or the region from which the genes are making up those messenger RNAs. We can do genome annotations, similar way in which we can find out different functions performed by different genes. We can do expression analysis. So once we have the idea about the regions of the genes in which we can have the gene expression, then we can explore the quantification, or we can explore that how much those genes are expressed. So that thing is under expression analysis. Once those genes they are expressed, then their products they interact with each other, and then they perform different metabolic roles in the shape of different metabolic pathways and networks. So we also do that in the genome analysis. Functional genomics is where we are actually looking into the different functions performed by different regions of the genome, actually under the control of different genes, and what is the effect of changes in those genes. Specifically, if we want to study about the genes related to diseases. We can also find out about the gene location, map the location of those genes on the chromosomes, so that is called as gene mapping. And we can also do comparative genomics, so in which we can take one genome and we can compare with some other genome, and we can find the comparative features, what's present in first, what's not present in second, and what we have intersections, blah blah blah. We can identify the clusters of functionally related genes, those genes which are maybe they might be having similar structures, they might be having similar sequences, and they are performing similar functions. So what those genes are, so that can give us the idea about the evolution. So obviously we can do evolutionary modeling. Sometimes we are interested in finding the genes which are kind of duplicated within the same organism. So in order to do that, this self comparison of the proteome. So proteome is actually the collection of the proteins which are derived from those genomes. So the whole collection of one organism's proteins can be called as proteome. So we can compare it with itself here, and then we can find about those sequences which are duplicated in it. Most of the time while we are doing those genome sequencing projects, our objective is obviously the health of us. Obviously we are looking for some correction of some diseases, we are improving some crop varieties for having more food, we are maybe looking into different drugs against different organisms. So it's a good idea to have those model organisms that can help us study these processes in labs. So there is a range of model organisms that have been selected so far. E. coli is a bacteria, then we have yeast, C. elegans is another example. We have a fly here. In this set we have a zebrafish, mouse, Homo sapiens, of course you and me, and then from the plants Arabidopsis is considered as a good model. So here in this diagram we see a universal tree of life that has been made with the help of the structures of small ribosomal RNA unit. It divides whole living organisms into three groups. We have bacteria at the top, we have archaea, these are special organisms which live under harsh conditions, and then we have eukarya, which is obviously the biggest among all. So we pick those model organisms from important branches of this tree of life. So for example, E. coli is right here. We picked yeast as an example of fungi. From animals we have worms, flies, fish and mice. Obviously Arabidopsis, rice and soybeans are the examples from plants. So we try to get these organisms best representatives from different classes, from important branches on this tree of life. So in the end we conclude that sequencing of genome
paves the way for future discoveries, and model organisms are the best source with which we can study or these genomes, and then we can interpolate those results towards the higher organisms. सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. फ़ौरन से हम रीडिंग कर लेते हैं. हम सबसे पहले प्लीज साउंड कर लेते हैं. इसको हम करते हैं रीडिंग. जीनोम इंफॉर्मेटिक्स जीनोम इंफॉर्मेटिक्स ऑल्सो जीनो इंफॉर्मेटिक्स is the field of study of information processing and flow in genomes. More than 20,000 genes are there in the human genome. Comparing to the notation of genes, how their expression is regulated are largely unknown. ठीक है. Moreover, identification of these regulatory regions in the genome seems to be very important for molecular medicine because mutations in these regions might be responsible for many diseases. सही हो गया. Today, more than 40 genomic sequences of various vertebrates are available, and comparative genome analysis are necessary to understand the changes in genomic structures and to identify functional regions. The main focus to get most insights into the regulation of gene expression which may cause some diseases by using bioinformatics means. The current research topics are identification of cis regulatory elements for transcription and splicing, comparative genome analysis to understand gene duplications and gene rearrangements. सही. उसके बाद हमारे पास है genome informatics, analysis of sex differences and gene expression in cancer tissues. With the progress of high throughput analysis such as microarrays and next generation sequence technologies, interpretation of the data is not possible without computational analysis. Massive data analysis is not only for bioinformaticians, but the researchers working at the bench are also required to master to use of some basic tools and databases. To support those researchers, genome sequence analysis and the high throughput data analysis are required. Okay. So an interactive process between experimental molecular biologists and bioinformaticians is necessary to fully facilitate genome data and high throughput data. Such process includes feedback loop between hypothesis making and experimental verification. सही हो गया. अब चलते हैं अपने PPTs की तरफ. थोड़ी देर में खुल जाएगी. अभी हो गई है जनाब ऑलमोस्ट ओपन. ये ओपन हो गई. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको हम लोग. Genome informatics introduction. Genome sequencing provides the sequence of all the genes of an organism. A major application of bioinformatics is analysis of full genomes that have been sequenced. ठीक है. Introduction. Challenge is to identify those genes that are predicted to have a particular biological function. सही. Genomics study of all of a person's genes, the genome, including interactions of those genes with each other and with the person's environment. NHGRI. ओके. इसके बाद हम चलते हैं आगे. जीनोम इंफॉर्मेटिक्स में जीनोम इंफॉर्मेटिक्स इज द फील्ड इन विच computational and statistical techniques are applied to derive
बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीनोम सीक्वेंसेस। सही हो गया सवाल। जीनोम इंफॉर्मेटिक्स इंक्लूड्स methods to analyze the DNA sequence information and to predict protein sequence and structure. Losifov et al. 2014। सही। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ जीनोम सीक्वेंसेस फैसिलिटीज, द डिस्कवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म्स, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर genetic variability both between and within the organisms. Sahi, following tasks sequencing, assembly, repeat identification and masking out, gene prediction, looking for EST and cDNA sequences, and genome annotation. Sahi, expression analysis, metabolic pathways and regulation studies, फंक्शनल जीनोमिक्स, जीन लोकेशन और जीन मैप आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास कंपैरेटिव जीनोमिक्स, आइडेंटिफाई क्लस्टर्स ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन्स, एवोल्यूशनरी मॉडलिंग, सेल्फ कंपैरिजन ऑफ प्रोटियोम, मॉडल ऑर्गेनिजम्स, ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्क्रिविसिए, यीस्ट, सी एलिगेंस वर्म, डी मेलानोगास्टर फ्लाई, टेन्यू वीरियो, zebrafish, mus musculus, mouse, homo sapiens, you and me, so arabidopsis plant। सही। इसके बाद में हमारे पास जीनोम इन्फॉर्मेटिक्स में ये 3 डिविजन आ गई है, बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया। ठीक हो गया। और इकोलाई इज फ्रॉम बैक्टीरिया, यीस्ट सैकरोमाइसिस is from this eukarya, and then worms, flies, mice is from eukarya, arabidosis, rice, soybean is from eukarya plants। ठीक है। इसके बाद चलते आगे है कंक्लूजन, सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस ऑफ फुल जीनोम्स paves the way for future discoveries. Different model organisms can help explore our genome and what matters most for us। ओके, सही। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा न्यू था, एटलीस्ट मेरे लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए भी न्यू ही होगा। सो काफ़ी कुछ जहन में बैठ गया। अब हम चलते हैं अपनी पोस्ट असेसमेंट की तरफ। ठीक है, अब पोस्ट असेसमेंट में देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। चलें जी, इसको पढ़ लेते हैं। F1 and F2 आर रेफर्ड एज पेरेंट्स, F1 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, नॉन फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स, तो ये पेरेंट्स वाला ट्रू है। फ्रॉम DNA सीक्वेंस इंफॉर्मेशन वन कैन प्रेडिक्ट प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर, प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली, ये सब हो सकता। ओके, तो अच्छा ठीक है। उसके बाद हम रीटेक कर लेते हैं, computational and statistical techniques used to derive biological information from the sequence genome is called genome informatics. Dash is the field of study of information processing and flow in genomes. Genome informatics. So both are correct. Thank God। अब चलते हैं आगे। हम लोग अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 20। टॉपिक नंबर 20 आ गया है प्रोकैरियोटिक जीनोम। ठीक है, टेक क्विज। तो जनाब, फ्रॉम DNA सीक्वेंस इंफॉर्मेशन वन कैन प्रेडिक्ट प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर, प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। सही। उसके बाद इसको पढ़े देखते रहो। उसके बाद करते हैं अपनी वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं। So now we study the prokaryotic genome. Prokaryotes are the organisms in which the DNA is not enclosed in membranes, so there is no nucleus. So as there is no nucleus, there are no justification to have other
membrane bound organelles. So these are relatively simple cells. Here in this diagram we see a prokaryotic cell, which is a bacteria right here. So we have the genome, the DNA in the shape of a big chromosome in the middle, and ribosomes, small structures. Obviously protein synthesis is needed for every organism, so ribosomes are also there. And then we have a relatively simple cell, and then we have its walls or different layers. Here we see a comparison between a eukaryotic cell and a prokaryotic cell. So as we see in these circles, we have all those membrane bound organelles which are present. One of them is mitochondria, so that is involved with the respiration process, so in which the food is broken down into the energy. So there is a hypothesis that this mitochondria actually evolved from a bacteria. That hypothesis is called as endosymbiont hypothesis. So here is a comparison between the sizes also. So eukaryotic cells are complex and bigger than prokaryotes. So the first prokaryotic organism that was sequenced was Haemophilus influenzae. We have seen that in a previous section. So that was the organism that was sequenced in a relatively moderate cost and with an efficient pace, and it paved the way for sequencing of the other organisms. So those study of those prokaryotic organisms is important. So there are different criteria for selection of those organisms to be sent into genome sequencing projects. So foremost important them is that there might have been intensive studies on that organism, so it's been a model organism and that has been investigated in details. It might be important human pathogen, so that's why we are studying its genome. It might have some phylogenetic importance, and the sequences were annotated as they were sequenced. So here in this diagram we see different prokaryotic organisms, representative prokaryotic organisms and their genomes. This E. coli that was sequenced by Blattner et al. So that has a genome size. So we see its phylogenetic group also, it's a bacteria. Then in this set we have just one archaea, and we have rest of them which are bacteria. So genome size is 4.6 MBs, and number of protein coding sequences are there in these parentheses. So there were 4000 genes in this organism. Then archaea methanococcus, that is 1.66 MB, and it has 1682 genes. Then we have Haemophilus influenzae, 1.83 MB and 1743. It's a human pathogen. We can also have descriptions of these organisms, like E. coli is a model organism, and then obviously this archaea, it grows at high temperatures and it produces methane. Maybe good to have natural gas from it. We can also have other organisms like Mycoplasma pneumoniae, pathogens. Obviously it was 0.82 MB and 676 genes. And then we have in the end we have this Syncocystis, that is a bacteria, so that is 3.57 MB and it has 3168 genes. So prokaryotes are simple genomes, they are easy models to study the biochemistry and physiology of life, and then sequencing is normally done on these simple genomes first, and then it helps exploring the complex genomes. So हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. रीडिंग कर लेते हैं हम लोग. हमारी रीडिंग आ गई है तो पीपीटीज डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है, पीपीटीज को ओपन करेंगे और इसको पढ़ लेंगे. और ये रहा हमारा काम. Prokaryotes are the prokaryotic genome. Prokaryotes are the organisms whose genetic material is or DNA is not enclosed in a nuclear membrane, no membrane bound organelles. इसका ये मतलब है. ठीक है. Prokaryotic genome, ये देखिए हमने सेल दिया हुआ, इसकी लेबलिंग की हुई है. न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, कैप्सूल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, पिलाई और ये फ्लैजिला. इसके बाद हमारे पास में आ गया प्रोकैरियोटिक जीनोम. अब ये
अच्छा प्रोड्यूसर्स मीथेन, ये दूसरा वाला अगले का, ठीक है। हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजी, तो फ्लिचमैन इटॉल 1995 इसने डिस्कवर किया, बैक्टीरिया है ये, और 1.83 इसका जीनोम साइज है। उसके बाद 1743 इसके जीन्स का नंबर है, ठीक है। ह्यूमन पैथोजन है ये, सही। माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो ये है हिमेलरिच इटॉल 1996 इन्होंने डिस्कवर किया, बैक्टीरिया है ये ऑर्गेनिज्म। उसके बाद 0.82 इसका जीनोम साइज है, 676 इसके जीन्स का नंबर है, ठीक है। ह्यूमन पैथोजन दैट ग्रोज इनसाइड सेल्स मेटाबॉलिकली वीक, सही। बैसिलस सबटिलस, ठीक है। कुनसेट इटॉल 1997 इन्होंने डिस्कवर किया, बैक्टीरिया है ये, 4.2 इसका जीनोम साइज है, 4098 इसके नंबर ऑफ जीन्स है, मॉडल ऑर्गेनिज्म है ये। एक्विफेक्स एओलिकस, ठीक है। डेकर्ट इटॉल 1998 में इन्होंने डिस्कवर किया, ये बैक्टीरिया है, 1.55 इसका जीनोम साइज है, और ये 1512 की पावर बी ये इसका है नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है। एंशियंट स्पीशीज ग्रोज एट हाई टेम्परेचर एंड कैन ग्रो इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली मिनरल सॉल्ट्स, सही है। उसके बाद में साइनिकोसिस्टिस स्पीशी, तो यहाँ पर है केनिको इटॉल 1996 ए और बी, सही। बैक्टीरिया है ये, 3.57 इसका जीनोम का साइज है, 3168 इसकी नंबर ऑफ जीन्स। एंशिएंट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन बाय लाइट हार्वेस्टिंग may have oxygenated atmosphere, सही हो गया। अब हम कर लेते हैं जनाब, आगे चलते हैं हम लोग, अगले साइड में चल लेते हैं, सही है। Prokaryotic genome conclusion. Prokaryotes are simple genomes, easy models to study biochemistry and molecular biology of life processes. Sequencing is done on economically important organisms. सही हो गया। ये तो टॉपिक अच्छा समझ में आ गया, आप लोग को भी आई होप समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपनी पोस्ट असेसमेंट की तरफ, क्विज ले लेते हैं, क्विज लेंगे तो आगे चल रहे, ठीक है। Sequences were dash as they were sequenced. Sequences were annotated, aligned, balanced, I think annotated, ठीक है। चलते हैं आगे। More than dash genes are there in human genome. अच्छा, ह्यूमन जीनोम में 20,000, 35,000, 30,000, ये लग रहा है मुझे 20,000 नंबर, ये दोनों हो गए करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं आगे, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 21, इस वीडियो का थर्ड टॉपिक है और लेसन नंबर 21 है मेरा, तो यहाँ पर है यूकैरियोटिक जीनोम, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपनी प्री असेसमेंट की तरफ, क्विज ले लेते हैं, सही हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक जीनोम, न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक जीनोम, तो हो गया, सेव कर लेते हैं, गलत है, अच्छा फॉल्स, तो इसको दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। हेमोफिलिस a bacterium with genome size of -174314 encoding genes and it's a human pathogen. 1.739688, I think 1.73, I don't know, सही है क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा है, याद पढ़ी क्या। Sequences were dash as they were sequenced, annotated, सही हो गया, ये हो गया करेक्ट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करेक्ट हुआ। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, तो वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। इसका नाम है यूकैरियोटिक जीनोम है इसका टॉपिक। So as we have seen that prokaryotes are simple genomes, in comparison the eukaryotes are relatively complicated. So eukaryotes have larger genomes, they have tandem repeats in them, and their introns are there
and which are in between the exons, which are the protein coding regions within the genes. And eukaryotes have a little bit complicated genome. So in the chromosomes, the DNA is grouped as heterochromatin, densely packed region, and euchromatin, which is a lightly packed region. Here is the typical eukaryotic cell. So we see it's pretty tough as compared to the prokaryotic one. So we have those the nucleus in the middle. We have those lines or networks of channels coming out of the nucleus called as endoplasmic reticulum, help in transportation. For protein synthesis, we have those ribosomes. For energy synthesis, we have mitochondria. We also see cytoskeletal, so that supports makes the structure of these cells intact. And Golgi operators, they are concerned with the secretion. So large complicated membrane bound organelles are present in the eukaryotes. So here in this diagram we see the connection between the DNA and the chromosome. So here towards our left we see a DNA strand which is a 2 nanometer wide strand. So the DNA wraps over the protein complex molecules, which we call them as histones. So here we have those histones. These are histones 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the DNA wraps over them, and this kind of structure in which we have a histone and the DNA, we call it as a nucleosome. So then these histones, they turn around and then they make some wider structures. So we come up to a 30 nanometer filament right here in this section. Then these sections, these structures, they supercoil on themselves to make those further bigger fibers, and then up till they reach into the chromosome. The width is 1400 nanometers. So if we look into the chromosome, we can recognize there are kind of different arms in it, so which we call it as sister chromatids. Remember, this is just one chromosome, but we have two chromatids. And then somewhere in the middle we see a constricted part, we call it as centromere. So the middle part of the chromosome, we call it as centromere, whereas the terminals, we call them as telomeres. Please remember these nomenclature while we are discussing the heterochromatin and euchromatin parts. So chromosomes, if they are stained with their dyes, they give different coloring patterns. We can come up with dense heterochromatin region, and we can come up with light regions which are called as euchromatin regions. So dense regions, obviously they are densely stained with the dyes and they take more color. Light regions take less color. So if we look into the gene expression, the heterochromatin regions are packed, so the enzymatic machinery cannot reach there. So there is these regions are poorly transcribed or poorly expressed. Whereas if we look into the euchromatin regions, so they are mostly highly expressed. Here is the diagram in which we can see the relationship between heterochromatin and euchromatin. So you look into these nucleosomes, which as we have seen earlier, these are the combinations of DNA and histones, so they are quite jam-packed with one another. So obviously the enzymes, it's hard to go and to access the DNA which is embedded in between. So there are different modifications on the DNA or on the histones that bring about those structures. Here we see them. So for example, there are histone methylations in which methyl groups are added to those histones, and in that case the system moves towards this side, so it becomes euchromatin. In the same way, we see that there are some other methylations on some other amino acids that can move back into the other direction also. So histone deacetylations and histone methylations, and there are some other complex proteins which get attached and may give us this heterochromatin region, and whereas the reverse processes, they give us this euchromatin region. So here we see in the euchromatin region, the histones are quite spaced and DNA can be accessible. So this is the reason why we see that this euchromatin part is expressed more as compared to the heterochromatin part. So eukaryotes are distinguished by the presence of prominent
nuclei. They have larger genomes and their chromosomes are relatively complicated. सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। फटाफट से हम लोग अपनी रीडिंग कर लेते हैं और हमारी रीडिंग तक हम पहुंचने वाले हैं। ओके, हम पहुंच गए हैं। हम डाउनलोड कर लेते हैं पीपीटीज। इस बार पीपीटीज नहीं है और इसमें हैंडआउट्स डाउनलोड हुए हैं, कोई बात नहीं, उसमें भी पढ़ लेंगे। यूकैरियोटिक जीनोम, द जीनोम ऑफ मोस्ट यूकैरियोट्स आर
other methylations on some other side, amino acid that can move back into the opposite directions also. So histone methylation, histone deacetylation, and there are some other complex proteins which gets attached and give us this heterochromatin region, and in the reverse process we get the euchromatin region. In the euchromatin region, the histones quite spaced and DNA can be accessible. So this is reason why the euchromatin region is expressed more as compared to the heterochromatin region. सही हो गया जनाब DNA को, ताकि हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाए, ठीक है। तो कंक्लूजन्स में आ गया, वी कंक्लूड दैट यूकैरियोट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ prominent nuclei, ठीक है। यूकैरियोट्स हैव लार्जर genome, tandem repeats and introns in their protein coding genes, that is they are complicated. ओके, हम कर लेते हैं इसको क्रॉस, हम चल लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में जाकर So as we have seen that पहला काम अपने आवाज़ बंद करनी है, फिर दूसरा काम हमने वीडियो पर बड़ा करना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी हमारे पीपीटी का काम आता जाएगा हम उसे करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यूकैरियोट्स, इंट्रोडक्शन है हमारे पास, यूकैरियोटिक जीनोम, ठीक है। इंट्रोडक्शन, यूकैरियोट्स हैव लार्जर जीनोम्स, हैव टैंडम रिपीट्स, ठीक है। उसके बाद हैव टैंडम रिपीट्स, हैव इंट्रोन्स इन देयर प्रोटीन कोडिंग जीन्स, सही है। तो हेटेरोक्रोमाटिन एंड यूक्रोमाटिन रीजन, सही है, और दो रीजन के बारे में बता दिया। और उसके बाद में अभी हमारे पास आ गई है ये डायग्राम। राइबोसोम्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइडस है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, गोल्गी apparatus, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पेरोक्सिसम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स, ये सब कुछ यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो इससे इसकी कम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा भी हो जाता है, सही है। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या था, न्यूक्लियोसोम बना हुआ होता है, ठीक है। स्मॉलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम होता है एक स्ट्रैंड के अंदर, वो स्ट्रैंड जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के अगेंस्ट घूमता है और वो ट्विस्ट बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो ट्विस्ट हुई होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। उसके बाद फिर यहाँ पर 30 नैनोमीटर्स का फिलामेंट बन जाता है, ये सुपर को ये कोयल हो जाती है एक दूसरे के साथ, तो एक दो बार कोयल होती है तो फिर वो 30 नैनोमीटर का फिलामेंट बनता है। उसके बाद ज़्यादा कोयल होती है, सुपर कोयल होती है, तो फिर 300 नैनोमीटर बन जाता है, फिर और भी कोयल होती है तो फिर 700 नैनोमीटर का बन जाता है, तो फिर एट द लास्ट क्रोमोसोम की शेप आ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कोयल हुई होती है एक दूसरे के साथ, अपने एक दूसरे के ऊपर ही, तो ये सारी की सारी 1400 नैनोमीटर की होती है। और इसके सेंट्रल पार्ट को कहते हैं सेंट्रोमेयर, और टर्मिनल पार्ट को कहते हैं टीलोमेयर, और उसके अलावा ये पूरी की पूरी एक लाइन जो है क्रोमोसोम की, इसको कहते हैं क्रोमाटिड। ये सिस्टर क्रोमाटिड्स है, दोनों को साथ में बोलेंगे तो ये होगी सिस्टर क्रोमाटिड्स, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, चलें जी। अब यहाँ पर आ जाएंगे हमारे कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्टेनिंग क्रोमोसोम्स विद डाइस प्रोसीजर्स produce dense heterochromatin, light euchromatin. Heterochromatic regions are poorly transcribed, expressed euchromatic regions are highly expressed, ठीक है, सही। उसके बाद फिर हमने ये डायग्राम भी देखी हैंडआउट्स में, सही है, और फिर हमने इसको पढ़ा भी, सही हो गया। उसके बाद बहुत कम ही इंफॉर्मेशन रहती है। यहाँ पर आकर के हमारे पास एक स्लाइड और है, और यह है कंक्लूजन वाली स्लाइड। यूकैरियोट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, हैव लार्जर जीनोम्स, टैंडम रिपीट्स एंड इंट्रोन्स इन देयर प्रोटीन कोडिंग जीन्स, ठीक है। तो क्या काम हमने, हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। हम चलते अपने कोर्स असेसमेंट की तरफ क्विज ले लेते हैं। In dash there is no justification to have other membrane bounded organelles.
transcribed. क्यों क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन नहीं है, ठीक है। तो ये होगा इनकरेक्ट, कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं क्रॉस। हम चल लेते हैं। हमारे इस वीडियो में 3 टॉपिक्स हो गए, 18, 19 और 20। हाँ, हमने इस वीडियो में 19 टॉपिक किया, 20 टॉपिक किया, 21 टॉपिक किया, ठीक है। अब क्या 3 टॉपिक्स